Manpreet, welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. Today I invite a very special guest of my channel, Mr. Jitendra from BSBI Berlin. So let him allow to introduce himself first. Yeah, please, Jitendra. Manpreet, thank you so much, and very excited to be at your channel. And I have been we have been in touch with you for a long time. And thank you so much for inviting me. I would like to greet all your viewers, all your guests, all your audience. And as you have said that my name is Jitendra and I'm representing this good college called BSBI, Berlin School of Business Innovation. We are a business school located in the heart of the Berlin city. You know, Berlin, it is a German capital and it's one of the largest city of Germany. So yes, thank you so much for having me and very excited to talk to you and to discuss on various topics. Yeah, thank you for your valuable time also, first of all. Actually, we Career Talks followers all know that we are specialized in public university applications. We always guide our students for public universities. But if I take a look on the courses of BSBI University, so I got a very good points that yes, there's a scholarship options because sometimes if guide my students for public universities, they check that there are some entrance exams and also student click 13-year education. But if I check this private university BSBI regarding, there is no need of any German language, there is no need of any entrance exam, there is no need of student click 13-year education. So this is the plus point what I see. So that's why I invite you to clear the all regarding detailed discussion about the BSBI courses. So first of all, I want to know some best points that how I convince my students so they take admission in these private universities, because my all students are mostly agree for the public universities. So what you how you convince me though so that I convince my students for private universities? Okay, Manpreet, first of all, thank you so much for this really, great question. And this is, I would say, one of the mostly asked question wherever I go in the seminars, wherever I meet any parent, any student, any applicant, those especially who are planning to study in Germany. So before I come on this public or let's say the private ones, let me give you, and I'm sure you're aware of this particular thing, which I'm going to tell you, that whenever we think of Germany, the very first thing is there are a few basic things, basic questions, basic, I would say, information that comes in mind that, Germany, number one, it's basically the free education. It is very, natural. It's very basic. And this is one question which a lot of people keep on asking me. Second is obviously, I have heard that Germany is known for basically the automobile engineering, or they are famous for engineering only, nothing else. But once again, I would like to thank for arranging this particular session. I'm going to burst all of these kind of myths. So very first thing, as you have said, that why you should send or why you should recruit your students, especially all those who are planning or who want to join the public universities, why they should come to BSBI, a college like BSBI, which is a private one. So let me start that there are a few basic and natural things which I would say that anybody can join BSBI, college like BSBI. Number one, if you talk about public university, the entry criteria is very, very difficult and very tough, and not many students can fulfill, and you are very much aware of that, right? The criteria is number one is obviously the percentage wise. For example, if somebody wants to study or somebody wants to join any undergraduate course in any of the public universities, so the very one thing is basically the first thing is that they need 13 years of education, and not many people will have that, right? But let's say somebody is already having 13 years of education. So what is next? Next is obviously most of the German universities will ask you or will ask that particular applicant to have at least B1 level of German language, because most of the German universities will be teaching you or will be their class arrangement is obviously in German language. Most of them, yes, there are certain who are already teaching in English also, but maximum majority of them is the medium of instruction is German language. That's 3. And then obviously there are many other, but let me say one more, which is, for example, there is a student who is already meeting these two main requirements, which is 13 years of education. Maybe let's say they have a high percentage, really good score in their plus 2, maybe let's say 80, 85, 90. And the third one is they also having, let's say, this B1 level of German language, which means they are full on qualified for any public universities. But this one point, I'm telling you, not many people think about this one. That is, suppose when you join these universities, when you join these public universities,
First thing is, you are not the only one who is basically going to that particular university. There are more than, I would say, 5,000 sometimes. I've seen universities where you will find more than 10,000 or 12,000 or 15,000 students in one particular single university. And the class size of these universities are, I would say, sometimes 300 and 400. I've seen 500 students sitting in one particular class, right? Now you imagine yourself, for example, you are a professor of that particular class, and you have to kind of, teach these 500 or let's say 300 students. How would be your situation? You can imagine. So what I'm saying is, when you're sitting with, let's say, these 300 students, I can guarantee you more than 400 students will be the local or the German one. So what I mean to say that, like, local or German means most of these people will be able to speak in German language. They will be comfortably communicating, kind of, sharing their thoughts, sharing their queries, kind of doing negotiations with the professors if they have any kind of difficulties. But now you're a person, or I'm the person who is just having B1 level of German language. And obviously, you know what will be the situation. Wait. If you are talking that a student right now starting their bachelor's and only completed B1 level, this is not true. Like, when the student in Germany start B1, B2, C1 takes 6 months. After that, they already plan 13-year education. So you can say when they are in university, they are in Germany already from the last 1.5 year. So the country itself helped to convert into its language. So now they are not comfortable while they enter university. They are already in Germany from the last 1.5 year. So whenever the things are like free of cost for getting anything free of cost from the top one universities, so there is need some to clear that bridge, no? So the students are already in Germany from 1.5 year last and already in the culture of German language. So I guess they are uncomfortable while they're in German public universities. Manpreet, thank you so much for highlighting this, and I'm sure, you're partially correct, but still I would say this does not apply on all the students, honestly. Let me tell you, as I've said that, I've been associated with this BSBI college from the last 4 years, all right? And we are the college, I'm sure you would you would be asking this question maybe in later segment, but let me answer this now. We are the college, we have been having students from all over the world. We have students from more than 35 plus nationalities. And we are the college who understand that, more than 90% of the people, 90% of the students, they are not even, capable of understanding the basic German language. So what we do is, we are the one who provide free German language classes to all the students, and that too throughout their courses, whether it is 3 year of bachelor, 4 year of bachelor, or maybe 18 months of master degree or 2 year of master degree. And I can tell you, because I keep on getting calls from these students who are, who has stayed in that country, like the Berlin city, from the last 1 year, 1.5 year, and after 2 years also. Some of them, I'm not saying like all, but at least 50% of them, they are still not able to understand German language. So what I'm saying is, you can still not beat that German guy who is communicating with you, who is a local. Just like, for example, if we take let's say, an Indian example. For example, I'm based in Delhi. Obviously, I can speak English, I can speak Hindi, I can speak, let's say, my local language also. But if you tell me that, you have to go to Punjab, you have to study in Punjabi medium, and then you don't know the Punjabi language, that's okay, but we will give you the Punjabi language classes, and then you will be able to communication, then you will be able to read and write and speak. I'm telling you, yes, it depends on my hard work that how much time I'm spending on this German language. But in general, yes, in general, most of the people will not be able to be at that level where they should be, especially when it comes to the, giving you the lectures in the German language, asking you the question. Obviously, you will not gain that confidence. Yes, you may be able to communicate in basic language. Students feel comfortable when they like that they are according to their desired course and whole degree in English language. So they feel more comfortable. If I give them these options, you want this course in German language and we have option this course in English language. Obviously, they feel comfortable. Yes, so, yeah, very true. This is the point. Okay, now why the students choose BSBI? Okay, so I think before I come on this particular before I answer this question, I just want to complete my previous, let's say, this statement. Yeah, please. So when I'm saying that German language, obviously they should come to BSBI and they should they will be getting classes in the English language. But when I'm saying that, I'm not saying that German language is not important.
and one should not be kind of paying attention to German language. Let me tell you honestly, whether we are the, let's say, the private college, we are definitely the medium of instruction is in German, in English language. But at the same time, German language will play a very, very important role when it comes to the full-time job, when it comes to the quality of kind of your lifestyle, your, let's say, the networking. German language will help you to get the best of the jobs, right? So make sure all of those audience, especially who are watching this particular session, they should be kind of equally concerned about their language skill. They should spend at least, let's say, 1 hour on daily basis, so that, by the end of their courses, whether it is 18 months, 2 years, or 3 year, 4 year of degrees, they should be comfortable in speaking or basically, communicating. So now your question was that why one should come to BSBI. This is the best question. This is the question which I love. Yeah. And I would say BSBI is kind of, being, I'm not hesitating to say this, that BSBI is kind of my baby, because I'm the one who was the very first employee of this particular college. And I'm seriously very blessed to kind of, work with this great organization or this college. True. So BSBI, there are a few very natural reasons that why one should come to BSBI. Number one, when somebody plans to study any country, be it Germany or any other country, I would say the location plays a very important part, right? Because, for example, even if you're having a world-class university and the university is kind of located in somewhere in the remote area where you have to every day you have to spend, let's say, 1 or 2 hours in traveling, then you have to come to city for your work, for your part-time, for your accommodation, everything. So that gives you a lot of headache, and that kind of spoil you a lot of time. But college like BSBI, we are centrally located in the heart of the Berlin city. The exact name of the place or that lane is basically Potsdamer Straße, which is, I would say, this central Berlin. And the advantage of central Berlin, obviously, is basically the traveling wise, we will not have any kind of problem. They will have metros to travel. They will have public buses. They will have private taxis. And the best thing is they will have plenty of options. They can have the BMW taxis, and there's Audis and Mercedes. That is one. Second thing is obviously affordability. So BSBI is a college which is not only focusing on the quality of education, but we have kept the affordability in mind. So that is why if you look at our courses, if you look at our fee structure, I'm sure you're aware of this, but I'm very happy to share this information with all our audience, on all our basically the students who are planning to go to Germany, especially BSBI, that our fee structure, if I give you, let's say, a tentative idea, so 5 to 6 lakh rupees is per annum fees. That is the maximum, I would say, you can spend. And I don't think this, I would say, this a big amount or something like that, because there are a lot of colleges. I'm sure you're aware of, there's a college called MIT University in Noida, and I belong to a place called Dehradun. So there are a lot of, private institutions where you will see the fees is somewhere 4, 5, and 6 lakh rupees, sometimes even 8 lakh rupees per annum, right? And now you see, after kind of graduating from these private institutions, what kind of jobs people are getting, the salaries they are getting. Seriously, I mean, I keep on meeting such kind of people, and they are dying. They are seriously, I would say, not happy, right? So what I'm saying is the BSBI is known for the affordability. So this is basically the fees. Third thing is the beauty of BSBI is that, as I think I have already highlighted this particular point, the German language. So when one side, we want to give a comfortable situation, a comfortable environment to our student by giving them a English medium environment. But at the same time, we also understand that what is the value of this German language. So what we have done is we give free German language classes to all our students. So this is a big good news for all those people who are really not aware of this particular fact about BSBI. So we are the college, let me repeat this, that free German language classes will be offered to all the students at any level you want to study. As long as you are with the BSBI, we will take the charge of your German language. And yes, we will take the charge. We'll give you, our responsibility is to give you the classes, but your responsibility is to kind of spend at least 1 hour on daily basis, so that by the, let's say, 6 months, 8 months time, or maybe 1 year later, you should be comfortable in speaking, or at least basic German language you should be aware of. There are many factors. Sorry. Okay, so at this moment, yes, I can confirm that B2 level is the level which most of the students can have. But yes, it depends on the individual also, because sometimes, one student complete this B1 or B2 level in six months or 8 months. But sometimes if you are smart enough, you may go beyond that also. Yes.
Even after completing their studies for the PR process, they also need the German language certificate. Na? Either they are Yes, moving to Germany and they plan their whole study in English language, but still they need a German language certificates for it's very, very important. interviews Very and for important. PR. Yes, and I would like to discuss this PR point whenever you want, maybe in later. Of course. So please don't mind. Actually, I want this point detailed discussion because my students are mostly asking that, ma'am, we want only public universities. I'm always convincing my students for public one, but before introducing any private university on my channel, I want that you can try to convince them that why they choose these options. No? And Preeti, I think it's very important because हमारी जो audience है, they are smart enough to understand everything, right? So it's very important. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपकी queries हैं, जो भी बच्चों की specially queries हैं, and I think हमें इस सेशन में क्लियर करना चाहिए because अगर हम अभी सेशन क्लियर कर लेंगे, so obviously later on they are comfortable, they are confident कि भाई जर्मनी में जाके पब्लिक और प्राइवेट में स्पेशली क्या डिफरेंस है, right? So important है, I don't mind kind of answering any question you ask me. मोस्टली स्टूडेंट्स यही देखते हैं कि फ्री एजुकेशन की वजह से हम जर्मनी अट्रैक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में रहता है. पंजाब मोस्टली सारा कनाडा की तरह, लेकिन अब वो मतलब पंजाब आल्सो स्टार्ट अट्रैक्टिंग फॉर द जर्मनी. Yes, many. In fact, मैं आपको बताना चाहूँगा because although I'm not working in Punjab region, but there are a lot of people who keep on kind of approaching me. So there are some other staffs who is taking care of this, and I'm kind of in charge of Haryana market and obviously few other like Uttarakhand and all of these places. And अभी जो लोग पहले केवल कनाडा की तरफ देखते थे, जो केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके देखते थे, आज के डेट में they are working kind of full time job, वो अभी जर्मनी को उन्होंने दे दिया. Correct. Yes. So yes, I think people like us who are representing German education, we have been doing really good hard work, and you keep on kind of seeing my travel. So this is the reason that why people kind of feel confident to promote German education, because you are getting quality, you are getting affordability, you are getting a lot of other things. Mostly students convince होते हैं free education public, लेकिन German language की वजह से कहीं ना कहीं रुकते हैं. तो फॉर दैट हम इस चक्कर में मतलब इसके रिगार्डिंग हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोर्सेज हैं, तो आप आराम से इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल. या सो बिफोर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय BSBI. See, Manpreet, as I think I have started when we started this session, I said that we are being a B school. So I'm very happy to say that I think, let me kind of say this once in a different way, that BSBI is now, especially from the last 10 days, I'm sure you have already received all the details today, that we are no more just like a B school, but we have a lot of new programs. We have programs in hospitality, we have programs in health management, we have programs in computer science, especially at the bachelor level. We have in data analytics, and plus we have some, IT programs in masters. So probably we have courses for all the students. And the best part about these programs is that most of the students will qualify for all of these programs, because we are very flexible. Whether if you want, I mean, we can discuss about the entry requirement also, because BSBI is one of the very flexible college, because we understand that obviously because of this COVID, a lot of disturbance has been kind of going on. There are a lot of students who unfortunately, initially, because if you look at the initial journey from the, let's say, pre-COVID, so there were a lot of, restrictions. We were very particular that, we need a certain kind of a percentage. We need this much of, let's say, the IELTS or German language and a lot of other things. But keeping the current situation in mind, BSBI has kind of introduced a lot of the flexibility program. We have a lot of scholarship program. We have, if we talk about entry requirement, let me give you I would say, idea that all those people, especially for the bachelors, if you have a 60% in your +2, and if you have 6 band overall IELTS, if you have a PT 56, not less than 51, you will be qualified directly to get into any of the bachelor level, all right, depending on your +2 streams. And let's say now, I'm sure some of you is not having this IELTS. Some of you may be saying that, I don't have this PT as well. But I just recently graduated, or I just completed my +2. Maybe in July month, you received your result, the CPSC result. So what do I do? Do I have a place in BSBI if I don't have any kind of English language? Except that you have a MOI letter. Means if your studies was completely in English medium in your +2. So the good news for you is that yes, BSBI do accept applications with MOI, medium of instruction.
So you don't have to necessarily give IELTS, PTU, TOEFL, or Duolingo. But yes, if you can provide this MOI letter, we are more than happy to welcome you at BSBI. So yes, we have a lot of programs with a flexibility, flexible entry requirement. That means students of any stream all are welcome to BSBI. Yes, especially for the business programs, we don't look at the background. Just like look at the global MBA course. Global MBA and the MBA, we have two MBAs. One is MBA, which is awarded by CUC, Concordia University, Chicago. And the other one is basic global MBA, which is awarded by one of the greatest university in British University, UCA, University for the Creative Arts. So we don't look at the backgrounds. As long as you are you have a good reason to come to Germany, BSBI, you can join us. And no matter you are from the engineering background, you are from business, you are from art, science, or any other background, for global MBA or MBA degree, you're more than welcome, as long as we have a good SOP, a good objective to choose that particular course. So what is the total intakes like BSB have? See, as far as Germany is concerned, Germany means, I think I forgot to tell you a very good universities, we have two intakes, like March intake and this September intake. So for private. Okay, so one thing is confirmed, and since we have started this, so you are very, I would say, fond of the public universities, and very happy that you have invited me once again, and I'm very happy to answer and trying to convince you that we kind of collaborate and partnered well, so that we can recruit a lot of students in our college also. But anyway, so this intake, we have 3 intakes in Germany. Number 1 is February, May, and October. And the good news, which I wanted to give you, that we have 2 campuses now. One is Berlin City, and the other one is Hamburg. So in Hamburg, basically, we are more like the artistic, the courses or the IT special. Like we have 3 programs in Hamburg. One is animation, illustration, graphic design. All of these 3 programs will be in undergraduate level. Yes, bachelor level. And what the subject background required for these bachelors? So we do not need any specific background, but yes, if you're interested, if you can prepare, if you can create a portfolio, if you can give a good reason to join this particular course, we are more than happy. If anyone interested for bachelor's animation course, so either they are +2 background of any stream. Yes. Wow, that's great. Yes. Okay, and I just saw that there are some scholarship options also. Mm-hmm. Yes. So little bit. Okay. This is again another, as I've said, that this is one of the USP that why one should come to BSBI, college. That we are the college who understand, especially when I touch that particular COVID point. So it is not that BSBI is very, I would say, we are a good organization who is doing really good work. But the more than that, we understand the situation of the market. We understand the situation of a parent, and we also understand the situation of a student that not many people can afford, let's say, the 10 lakh rupees and 12 lakh rupees or 13 lakh rupees these days, especially after the COVID, because a lot of people have lost their jobs. A lot of people are doing their business, but they are going in loss. So having said that, what we decided is we are trying to support all these students who are dreaming to study abroad, and especially in the BSBI. So we have 2 scholarships. I mean, we have a scholarship for both the, level at the UG level as well as the PG level. In undergraduation or bachelor's, we have a scholarship up to 50%. All right. So 50% means, let's say the scholarship start from the 60% in +2. All right. And it goes up to 50% if somebody has, let's say, the 90% and above. And especially all those students, all your audience, those who are really keen to go to those public universities, they are the best people. They are going to be the happiest one, because ultimately they will be getting a course which is taught in English. At the same time, they are learning German language and with the affordability. Let me say to you, if somebody is having 50, let's say the 90% score in their +2, and I'm sure we have shared some of the profile, and they're going to get just 4,500 euros of fees, and that too, let's say annual fees 4,500 euros. And the best part is that this scholarship is going to stay with them for all the years. First year, second and third year means the annual fees will be just 4,500 euros, which is somewhere around, let's say, I think 3.5 lakh rupees annual fees, which is just peanuts as per the German standard, right? So this is the level of scholarship in undergraduation. Next is basically the PG, masters.
So in masters we can give up to 25% scholarship. So that is again after 25% scholarship, I'm sure, because as far as I can observe your profiles, I mean, your students' background, all of them are really, really good ones, and maximum of them will get the 25% scholarship in the masters. So after this 25%, I'm sure they will be the annual fees will come down to, let's say, 4.5 or maybe 5 lakh rupees. So look at the affordability, and this is what we are offering as a scholarship. With this scholarship options, the students enrolled their files on the spot. You can't imagine. We are just saying that now you are eligible for this scholarship, and the whole course is around like 8,000 euros and something like that. They are immediately on the spot. They are logging their files. Yes, they are happy with these scholarship options. Exactly, and in fact मैं ये चीज मैं खुद देख पा रहा हूँ जब से हमने आई थिंक मार्च या अप्रैल के महीने में हमने ये स्कॉलरशिप या डिस्काउंट स्कीम लॉन्च करी थी, आफ्टर ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड. सो उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि जो बेचारे पिछले एक साल से हमारे पास थे, एंड सम ऑफ देम, कुछ बच्चों ने इनफैक्ट अपना प्लान भी ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज सर हमारे पास अभी किसी के फादर की जॉब चलेगी, किसी के भाई की जॉब चलेगी, और किसी खुद की जॉब चलेगी, बिकॉज दोज हु आर काइंड ऑफ फाइनेंसिंग देमसेल्फ. तो उनके ऑब्वियसली जैसे बोल सकते हैं कि उनके सपने बेसिकली टूट से गए थे. बट आफ्टर दिस स्कॉलरशिप, जब मैंने सभी अपने क्लाइंट्स को बताया, जब मैंने आपको बताया, आई एम श्योर आपने स्कॉलरशिप को देखने के बाद ही अपना ये इंटरेस्ट अपना बढ़ाया है. सो वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स ना, मतलब ऑन द स्पॉट जब उनको ये पता चला कि हाँ स्कॉलरशिप है इतने अच्छे अमाउंट में, हम मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश लेवल में कर रहे हैं, कोई जर्मन लैंग्वेज भी नहीं चाहिए, और वहां जाके हम सीख रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, बट दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इनटेक. अगर वो प्लान करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो उनको मार्च इनटेक तक वेट करना है, क्योंकि इस इनटेक की सितंबर की डेडलाइन वाज ओवर. तो वो डाटा फॉलो अप में है, व्हेन दे सी दैट देयर इज अ स्कॉलरशिप, then they can easily happy to choose. I mean, you know that in a single day I log in 8 files single day. Wow. Because of this scholarship. Right. So very happy. वही मैं बता रहा हूँ, because I think we should be thanking, and I am especially thankful to the BSBI management, the higher authorities who had decided this, the really, I would say, the humanitarian kind of effort. Because normally अगर आप if you look at our fee structure, हालांकि still अगर आप पूरी फीस को भी, हमारी फीस को किसी दूसरे कॉलेज के साथ में अगर कंपेयर करोगे, वी आर स्टिल, आई वुड से, द अफोर्डेबल ब्रैकेट. बट स्कॉलरशिप की बात तो ऑब्वियसली हम लोग, आई वुड से, इट्स मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली जो आपके प्रोफाइल्स, आपके जो क्लाइंट्स, सभी लोगों को स्कॉलरशिप में वो कुछ फ्री ऑप्शन पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है. सी मैम, फ्री ऑप्शन, आई एग्री विद यू, फ्री ऑप्शन, बट वो फ्री के लिए पहली बात तो मुझे ये देखना चाहिए कि एम आई रियली एलिजिबल टू गेट द फ्री, नंबर 1. नंबर 2, व्हाट एम आई एम गेटिंग फ्री, whether it is really beneficial for me. Free in the sense, जैसे हमने बताया कि ठीक है, आप सब, let's say कि I qualify for the free thing. स्टूडेंट ने मेहनत भी की ना, अगर 12th में उसकी 90% है तो उसने 12th में हार्ड वर्क किया, तो उसी चीज का उसको बेनिफिट मिल रहा है. We are not giving scholarship to every student, लेकिन अगर कोई 90% स्टूडेंट है शीट, तो उसको ये स्कॉलरशिप मिलना, I guess it's a good option. Yes, correct. जी. So okay, next point is that कि अगर student BSBI से continue करते हैं अपना study करते हैं, तो on the meanwhile they are eligible for part-time job options also. जी, part-time is basically, Germany. Let me give you a little background of the Germany, and I'm sure being you are the expert, but let us kind of educate our audience, those who are new to this particular channel, those who are watching us for the first time. Germany, if you look at the German economy, so this is one of the greatest and the strongest country in the entire Europe. It's the most strongest economy, all right? There's no other country who is as strong as Germany. Second is, even if you look at the global, let's say the scale, the Germany is the 4th strongest economy in the world, right? So the reason of saying this, that, the better you have the economy, the more strong economy you have, the better kind of pay scale the people of that country would be. So having said that, the way you have asked me the question, the part-time job, first thing is, German government allows a student to work 20 hours per week, all right, during their studies, and 40 hours means full-time job if they have any kind of, the public vacations or public holidays, so they can work full-time also. Now that next question might be, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार, let's say कि हम 20 hours तो कर लेंगे, लेकिन कितना कमा पाएंगे, क्या हम अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है वहीं से कवर कर पाएंगे, या हमें अपने ब्लॉक अकाउंट पे, या हमें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा. So the good news is 90% of the people, 90% जो भी बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे अपना लिविंग एक्सपेंसेस वहीं पे पार्ट टाइम करके अपना कवर कर लेते हैं. मींस दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, अपने घर वालों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. और ना ही बहुत सारे बच्चे ये है कि ब्लॉक अकाउंट जो होता है उस पर भी डिपेंड नहीं रहते बहुत ज्यादा दिन तक, बिकॉज
वो ब्लॉक अकाउंट बेसिकली होता तो लिविंग एक्सपेंस के लिए है, बट जैसे ही आपका पार्ट टाइम जॉब लग जाता है वैसे ही ऑब्वियसली आप वहां से अर्न करना शुरू करते हो, तो आपका ब्लॉक अकाउंट का पैसा भी एक तरह से सेफ रहता है। ऑलराइट, कंट्री हेल्प और करता है अपनी पॉकेट रफल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। और इनफैक्ट बहुत सारे समझदार बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो कि ऑब्वियसली दे वर्क सो हार्ड, तो अपना लिविंग एक्सपेंस भी कमा पाते हैं और कुछ हद तक अपनी फीस को भी वो बच्चे पे कर लेते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अर्निंग वाइज जर्मनी इज अ हेवन। यस, मेहनत जरूर आपको करनी पड़ेगी एंड ऑब्वियसली यू हैव टू काइंड ऑफ डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट अगर आप इनकम की बात करें, पैसे की बात करें और ऑब्वियसली योर लाइफस्टाइल, जर्मनी इज अ कंट्री व्हिच इज नोन फॉर द लाइफस्टाइल, बिकॉज जर्मनी इज द कंट्री जो कि एक आपको ऐसा एनवायरनमेंट देती है कि नॉट ओनली लाइक मेनी अदर कंट्री, जहाँ पे कि आपको अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको या तो वो बेसिकली कहीं पे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आपको काम करना पड़ता है। बट जर्मनी और स्पेशली ये ट्रेंड यूरोप ने ही दुनिया को बताया कि बेसिकली you should not just focus on your, let's say कि भाई आप जैसे हमारा एशियंस का मेंटेलिटी होती है कि पैसा पैसा पैसा, but Germany is a country where you will obviously you will get your job, you will be doing your job, but at the same time the company will give you enough time to have your own life, to have your social life, to have your personal life, right? So what I'm trying to say that suppose आपका अगर let's say as per your contract अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है, तो 8 घंटे का मतलब 8 घंटा ही होगा, 8 से 9 नहीं हो सकता है एज पर, एंड दिस इज आई एम टेलिंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आई आल्सो वर्क विद दिस कंपनी। इंडिया में किसी को 8 घंटे पता ही नहीं क्या होते हैं। यस 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 यस, दिस इज वेरी ट्रू राइट। अब टाइम की जब हम बात करें, लेट मी से दिस पॉइंट बीएसबीआई के बारे में, व्हाई वन शुड कम टू बीएसबीआई, एंड ये पॉइंट स्पेशली हमारे जो इंडियन ऑडियंस है हमारी, उनको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगने वाला है। So looking at basically the students' lifestyle, so what we do is हमारे पास केवल 2 से 3 दिन के classes होती है weekly. Okay, we are not kind of organizing our classes just like the Asian method कि यहाँ पे भाई 6 और 7 दिन आपको क्लास में आना है. No, we want to give you enough time for your research work, for your assignments, and for your obviously to live your life and to explore the Germany or Europe, right? So 2 से 3 दिन आपको क्लास आना होगा. You can kind of share all your thoughts, your doubts, your queries. उसके बाद आपको लॉट ऑफ असाइनमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो असाइनमेंट्स के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए. तो टाइम इसीलिए दिया जाता है कि 4-5 दिन आप यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू काइंड ऑफ डू लॉट ऑफ रिसर्च. तो बाकी के आपके पास 4-5 दिन होते हैं, उसमें आप पार्ट टाइम करो, उसमें आप असाइनमेंट्स बनाओ. उसमें ऑब्वियसली आई माय पर्सनल एडवाइस, एंड आई एम श्योर आप भी इसी तरह से बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको केवल पार्ट टाइम ही करना है. यू शुड ऑल्सो काइंड ऑफ ट्राई टू मीट न्यू पीपल, try to build your network, try to be friends with the locals, Germans, French वहाँ पे इतने सारे हैं, Spanish हैं. Try to kind of be friend with these kind of people, so that you grow, so that you understand that culture very well. And what kind of part-time job options the students who are studying in BSBI kind, what like? Okay, so as far as part-time options are concerned, see, basically the part-time options are not, I would say, something special for the BSBI student, but the maximum or most of the students will be kind of working in those I would say some of them are working the Amazon, like those what do we say, the courier companies. Some of them work in the restaurant, some of them work in the, let's say, the shopping stores, shopping centers, those like clothing stores or something like this. Depending on obviously your language skills, you may get a job. Suppose if you are, let's say, the English speaker, so you may get a job in the, let's say, in the KFC, Domino's, McD's, and such kind of restaurants. But if you're a kind of a smart person, if you have the German language skills, you may get some official kind of job, maybe some back-end work. And the good ones, all those smart people, especially your audience, because I know most of them are kind of some of them will be having German basic level of German understanding. Some of them will be having good communication in English. So what I want to say to these people, to these students, is that you can also get jobs in your let's say the BSBI also gives jobs, especially part-time jobs, deserving one. ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा. Those who are the best ones, I'm sure you will have something in the BSBI. और अगर BSBI में let's say हम करेंगे, अगर नहीं होगा तो obviously we also try to help you out because we have a department. I know you may be asking this question. जो कि ये particular department जिसको हम बोलते हैं Student Career Service Center. So ये जो department है basically this department works with the companies as well as the students. तो अगर कोई बच्चा डिजर्विंग है और किसी कंपनी में कहीं पे वैकेंसी है, सो वी आल्सो रिकमेंड स्टूडेंट्स टू विजिट एंड टू गिव इंटरव्यू टू सच काइंड ऑफ जॉब्स. So yes, so this is about the part-time job. This is the kind of jobs the students get depending on their skills, depending on their background. कुछ बच्चे होते हैं कि भाई वो हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ में आ रहे हैं, so they have plenty of options.
कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले किसी फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स या फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस के साथ में आ रहे हैं, सो दे कैन गेट जॉब्स इन फाइनेंस आल्सो। हर तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है अगर हम बीएसबीआई जाते हैं तो, राइट? बिल्कुल 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 हर एक मतलब बहुत सारी जो ऐसे सर्विसेज हैं जो उन सब चीजों को हम बोले कि असिस्टेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलता है। मतलब हम लोग अगर बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जर्मन एम्बेसी एंट्री वीजा हमेशा 3 मंथ्स का देती है या मैक्सिमम ऑफर 6 मंथ्स। तो वहां पहुंच के उनको वीजा एक्सटेंड देखना है, सिटी रजिस्ट्रेशन देखना है, पार्ट टाइम जॉब देखना है, अकोमोडेशन देखना है, लैंग्वेज क्लासेस के लिए देखते हैं। तो ये सारा असिस्टेंस विद इन यूनिवर्सिटी विद इन कैंपस उनको मिलता है। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक और कारण है जो कि मैं अगेन आई वांट टू काइंड ऑफ कनेक्ट विद द पब्लिक यूनिवर्सिटी, व्हाई बीएसबी डज दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा नहीं कि मतलब सारे कॉलेज करते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड, नॉट मेनी कॉलेज डज दिस और नॉट मेनी कॉलेज हैव टाइम टू डू दिस। नंबर वन, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज़ बीएसबीआई हम कॉलेज जरूर हैं, ऑब्वियसली वी वांट लॉट ऑफ स्टूडेंट, बट हमें इतने बच्चे नहीं चाहिए कि बेसिकली हम उन बच्चों पे फोकस ना कर पाए उनके इंडिविजुअल लेट्स से रिक्वायरमेंट पे। बिकॉज कोई भी बच्चा, नया बच्चा जब किसी नई कंट्री में आता है, लेट्स से इंडियन बच्चा जब जर्मनी में जाता है, तो दे हैव लॉट ऑफ दे आर न्यू टू द प्लेस, दे डोंट नो लाइक वेयर टू गो, कहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगा, कहाँ पे हमारा वीजा एक्सटेंशन होगा, और पार्ट टाइम जॉब कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी। सो व्हाट वी डू इज ऑब्वियसली दैट इज व्हाई वी हेल्प देम, नंबर वन। नंबर टू, अगर हमारा कॉलेज का अगर आप क्लास साइज देखोगे या ओवरऑल स्ट्रेंथ देखोगे, तो वी आर नॉट अ कॉलेज जो कि हमारे पास, कि मैं बोलूं कि हमारे पास 10,000 15,000 बच्चे। नो, वी हैव हैप्पी 3,500 प्लस स्टूडेंट्स, अराउंड 34-3,500 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं। एंड अगर हम पर क्लास साइज अगर मैं बताऊं आपको, सो वी हैव लेट्स से अराउंड मैक्सिमम अराउंड 45 to 50 स्टूडेंट वन क्लास, नॉट मोर देन दैट, राइट? तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आपके पास इतने बच्चे हो, लेट्स से कि आप लिमिटेड साइज की क्लास साइज होती है, तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या जो हमारा ओवरऑल स्टाफ, जैसे कि मैंने आपको करियर सर्विस सेंटर जो बताया हमारा डिपार्टमेंट, या एकेडमिक डिपार्टमेंट हमारा है, सो ऑब्वियसली दे आर एबल टू फोकस ऑन एवरी इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि भाई उनके पास टाइम ही नहीं हो, इतने व्यस्त रहे या इतने बिजी रहे कि ऑब्वियसली नो दे आर नॉट इनफ टाइम, दे आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू काइंड ऑफ सॉल्व द क्वेरीज। एट द सेम टाइम जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दे हैव स्टूडेंट्स, उनके पास हजारों में बच्चे हैं, राइट? एंड आई एम श्योर अगर मैंने आपको बताया कि एक क्लास में अगर 500 बच्चे हैं, हर बच्चे की अगर एक क्वेरी भी हुई, एक डाउट हो, तो 500 क्वेरीज का मतलब होगा कि उसको पूरा हफ्ता चाहिए वो 500 क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। सो दिस इज व्हाई जब स्टूडेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में आता है, सॉरी आई एम इंटरप्टेड इन बिटवीन, नो इट्स ओके प्लीज, एज अ स्टूडेंट मेरे पास, मतलब एज अ काउंसलर मेरे पास स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज है, राइट ना? तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी क्वेरीज इस पार्ट में क्लियर हो, इस वीडियो में पूरा क्लियर हो, उसको कवर अप कर पाए। तो अगर मैं बात करूँ कि जो स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, उससे पहले उन्होंने 1.5 ईयर जर्मनी में स्पेंड किया, +2 स्टूडेंट्स का। तो उस टाइम पे जो कंडीशंस होती हैं, लैंग्वेज कंप्लीट करना या स्टूडेंट क्लिक को करना, तो लैंग्वेज करने के लिए मोस्टली कई बार तो स्टूडेंट्स प्राइवेट लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट? क्योंकि उनका कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, तो उसकी कंडीशन फुलफिल करने के लिए उनको ये मैंडेटरी होता है इनवॉइस लेना अपनी वीजा फाइल कंप्लीट करने के लिए भी। तो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स भी इसका टेक केयर करते हैं कि हम लोग ये सारा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक सिटी रजिस्ट्रेशन, वीजा एक्सटेंशन, पार्ट टाइम गाइडेंस और अकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप, एवरीथिंग। तो जब वो 1.5 ईयर से अगर मतलब एंट्रेंस एग्जाम ऑफ में परफॉर्म क्लियर हो जाता है, फिर तो फ्री वाला स्टूडेंट क्लिक पब्लिक मिल जाता है। अदरवाइज वो प्राइवेट वाले स्टूडेंट क्लिक पे फोकस करते हैं, उसके बाद वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। अब इन बिटवीन, अब जैसे वो 1.5 ईयर स्टूडेंट ने जर्मनी में स्पेंड किया, तो यूनिवर्सिटी एंटर करते समय तो शायद उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि इन सारे सर्विसेज का कौन टेक केयर करेगा। अगर हम बोले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर इंटरेक्शन नहीं हो पा रही, इन सर्विसेज के लिए तो इंटरेक्शन नहीं चाहिए। हाँ, अपने टॉपिक्स के लिए, उन चीजों को समझने के लिए उनको प्रोफेसर इंटरेक्शन चाहिए, ये पॉइंट जरूर है। बाकी जो सर्विसेज है वो स्टार्टिंग में प्राइवेट लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स या स्टूडेंट क्लिक इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। बट इस केस में अगर हम बोले तो बच्चा सीधा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जा रहा है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसको सारी सर्विसेज ये होता है कि अब मुझे वहां पे कोई असिस्ट करने के लिए है क्या। तो इसलिए ये हैप्पी मतलब पॉइंट है कि अगर हम बात करें कि बीएसपी में अगर स्टूडेंट जा रहा है तो वहां पे ऑन कैंपस ये सारे असिस्टेंट्स के लिए टीम प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में बच्चों को गाइडेंस मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बताया बिल्कुल आई एग्री विद दिस, ऑलराइट, एंड आई नो बिकॉज whatever you have said, I would say this is correct. But let me tell you one thing, because I have experienced this. All right, it's not that just I'm trying to kind of forcefully say this particular point, but this is what I'm going to say is based on my experience. मेरे पास काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन I would say 6 महीने में 8 महीने में 2-4 बच्चों को फोन जरूर आता है
and especially these are the students who have been studying with the public universities, honestly, right? और अभी मैं बोलता हूँ उनको कि यार पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज ड्रीमिंग इन इंडिया कि भाई हमें पब्लिक मिले, पब्लिक का मतलब फ्री मिले, राइट? हालांकि नोबडी काइंड ऑफ से दिस कि भाई जब उनको 1 साल 1.5 साल जो लैंग्वेज करना पड़ता है उसके लिए भी उनको पैसा कुछ ना कुछ देना पड़ता है, राइट? एंड देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एट द सेम टाइम। तो बच्चों को क्या क्वेरी रहता है कि सर मेरे बस का नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस, जितनी इंटेंस वहां पे इंटेंसिटी के साथ में बेसिकली वहां पे जो भी रूल्स और रेगुलेशन पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ में होते हैं, students are not able to kind of cope up in that environment. Why I'm saying this, they are not able to cope up because I know as per the let's say the standard जो यूनिवर्सिटी जो पढ़ाने का जो बेसिक स्टाइल है ऐसे ही होना चाहिए, but at the same time the public universities because obviously they are fully academic, they are fully into academy, पढ़ाई लिखाई में ही है, उनसे beyond obviously I don't think they do much. Yes, पढ़ाई के लिए they are one of the best one, all right, but we should not ignore the mindset of a student, especially if somebody is coming like people coming from the Asian region. हमारे यहाँ पे जो बच्चों के थॉट्स होते हैं, हमारे यहाँ पे जो बच्चों की मेंटेलिटी होती है, they are not just going for a study, let me tell you. चाहे BSBI में हो चाहे पब्लिक में हो, केवल वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहे only. Yes, that is definitely one of the prime reason to go to Germany, right? But they want to experience the culture, they want to experience the environment, they want to expose themselves with that culture, with that surrounding the Europe and the Germany. बट जब उनको वही सब चीजें सब कुछ साइड में हो जाते हैं, केवल उनको लेट्स से कि ऑल 5-6 days they are in the sitting in the classes, they are not allowed to take the off, they are not allowed to kind of take the holidays, they are not allowed to kind of do some kind of what do we say कि अगर उनको कहीं पे भी कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, they don't have enough time, I'm telling you, right? So see, पढ़ाई definitely is very important, but at the same time you need some time for kind of to have yourself to explore the financially burden नहीं है, लेकिन उन चीजों को मैनेज करने का बर्डन काफी, आप ये कहना चाह रहे हैं? Exactly. Let me tell you, एक चीज मैं आपको अपनी लाइफ और आपकी लाइफ से कनेक्ट करवाता हूँ भाई. फॉर एग्जांपल दैट you and me, it's I would say almost late evening now, right? We're still working. Yes, what I'm trying to say is obviously we might be having enough money, but unfortunately if we are kind of, if all 7 days we are doing the same thing, like सुबह 6 बजे से लेके और रात को 8-9 बजे तक काम कर रहे हैं, then we don't have enough time. So obviously after some time we will feel exhausted कि यार देखो पैसे भी है सब कुछ लेकिन टाइम ही नहीं है. So what I'm saying, the college like BSBI understand the mindset of the college, the student. So we do not only push you to study hard, we are the one of the college that focuses on study on very aggressive note and very positive note, number one. But at the same time we ourselves, we are the college जो कि हम in fact आप believe नहीं करोगे, जब कोविड नहीं था उस समय हम almost monthly या हर 2 महीने में एक बार हम बच्चों को different industrial tour करवाते थे, different कंपनीज में हम लेके जाते थे. हमने बच्चों को एक बार हमारा आई थिंक 2020 का बैच था हमारा, हम जिनको लंदन हमारा बिकॉज BSBI बिलोंग्स टू अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड गस ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम, तो हमने ग्लोबल गस के ऑफिस में हम उनको लेके गए, स्पेशली MBA के बच्चों को, ताकि वहाँ पे बच्चे ऑपरेशन देखें, वहाँ पे HR का काम देखें, वहाँ पे सेल्स का काम देखें. एट द सेम टाइम जो हॉस्पिटैलिटी के हमारे बच्चे होते थे, हम कॉलेज वाले बच्चों को किसी 5 स्टार होटल का टूर करवा दिया, उनका फ्रंट ऑफिस का सेक्शन बता दिया, उनका HR का डिपार्टमेंट बता दिया, किचन दिखा दी, and obviously marketing के बच्चों को हम different industry tour करवाते हैं. What I'm saying is, so why we do this, because we are coming with a background that, because especially if you talk about if I want to tell you a little bit of my background, I was once upon a time I was a student. I was the same student who used to dream to go to overseas. So what I did is I decided to go to Singapore. I studied well. All right, I got a let's say MBA degree, and that is how basically I experienced कि यहाँ पे यार सिंगापुर में भी वही है कि it's not only the education which will kind of give you everything. Education के साथ साथ में आपका exposure, education के साथ साथ में आपका जो education, practical education पे बहुत focus करता है, मतलब concepts clear होते हैं students के. जी मतलब ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीच में होना चल रहा है. It's important to clear the doubts, okay? स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि वो अपने फ्यूचर का डिसीजन आगे करेक्ट मतलब वे में कैसे ले सकते हैं. जी यस. या एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को जो BSBI का लगा कि यू हैव एन ऑप्शन लाइक विदाउट ब्लॉक अकाउंट आल्सो पॉसिबल. Yes, and let me tell you, please complete your question. Please इसको कंटिन्यू कीजिए. ब्लॉक अकाउंट बिना कैसे स्टूडेंट्स प्लान कर सकते हैं? जी. First thing is obviously when we talk about first thing is what is this block account? It is very important. बहुत सारे लोगों को शायद ब्लॉक अकाउंट नहीं पता होगा. So this block account basically is nothing but basically 1 year living expenses. All right. So ये अकाउंट एक basically आपको जर्मन बैंक में खोलना पड़ता है,
जिसमें कि आपको 10,332 यूरोस को आपको ब्लॉक करवाना पड़ता है, ऑलराइट। और जैसे ही आपका वीजा लगता है और जैसे ही आप बर्लिन में पहुंचते हैं, आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन आपको ये उसमें बैंक की सारी डिटेल मिल जाएंगे, और आपके पास एटीएम कार्ड है, जो भी कार्ड आपको मिलेगा उसके बेस पे आप मंथली विड्रॉल आप उसका कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक अकाउंट। अब जैसे मैम का सवाल है कि आप लेट्स से हमारे पास बीएसबी में बिना ब्लॉक अकाउंट का कोई ऑप्शन है या नहीं है। सो यस, दिस इज अ गुड न्यूज दैट वी हैव अ ऑप्शन जहां पे कि बच्चे को ब्लॉक अकाउंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, सेविंग अकाउंट में लेट्स से अप टू मे बी लेट्स से 3 महीना पुराना अगर आपके पास फंड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो ऑप्शन कैसे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। So basically, when we were kind of going through this COVID period, और स्पेशल जर्मन एम्बेसी में आपको पता होगा यहाँ पे कि ब्लॉक, यहाँ पे वीजा अपॉइंटमेंट्स के लिए काफी सारा चैलेंज करना पड़ता है बच्चों को, राइट। तो जब यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तो what we did is we decided to collaborate or to partner with two of the very renowned business schools, जो कि एक पेरिस में है और एक एथेंस में है। तो जो पेरिस और एथेंस जाने के लिए आपको बेसिकली कोई किसी भी तरह का ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं पेरिस की बात करूं तो पेरिस में आपके सिंपल, अगर आपके पास ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास, 8,000 यूरो के आसपास अगर आपके फंड पड़े हुए हैं सेविंग अकाउंट में, तो आप इजिली उस पेरिस के लिए अपनी फाइल लगा सकते हैं। पेरिस में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल आप ऑब्वियसली सब कुछ जो आपका प्रोसेस है बीएसबी के थ्रू ही होगा, एंड 1 साल आप पेरिस में लगाओगे, सेकेंड ईयर के लिए आप बर्लिन आ जाओगे, ऑलराइट। सिमिलरली मैं अगर ग्रीस की बात करूं तो ग्रीस इज इवन मोर अफोर्डेबल, ऑलराइट, क्योंकि पहली बात जो ग्रीस का फी स्ट्रक्चर, इट इज ऑलमोस्ट आई वुड से 30% लेस देन फ्रांस एंड जर्मनी। सो अगर मैं ग्रीस की बैचलर की बात करूं, ग्रीस में हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, जिसमें एक हमारा बैचलर कोर्स हो गया जिसका नाम है बीए इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी 3 साल का कोर्स है। फीस इज, आई एम वेरी प्राउड टू से दिस एंड वेरी हैप्पी टू से, ओनली 6500 यूरो हमारी कोर्स की फीस है, 6500 यूरो जी, 6500 यूरो। सो ग्रीस के लिए तो 6500 यूरोस, व्हिच आई वुड से इज रियली अमेजिंग, बहुत अफोर्डेबल है। सेकंड कोर्स हमारे पास एमए इन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट, जो कि हमारी एक बहुत ही रिनाउंड इटालियन यूनिवर्सिटी से अवार्डेड है, मींस एफिलिएटेड है, और इस कोर्स की जो फीस है मात्र 7,000 है, 7,000 यूरो, वो भी एंटायर कोर्स की पूरे 18 महीने की फीस जो है वो है 7,000 यूरोस। तीसरा प्रोग्राम हमारे पास है, दैट इज ग्लोबल एमबीए, अगेन 18 मंथ्स, एंड द फीस इज अगेन एज अफोर्डेबल एज 8,000 यूरोस, 8,000 यूरो, ऑलराइट। सो 8,000 यूरो हो गया, प्लस आपको जो फंडिंग आपने बताया, यहाँ पे भी ग्रीस के लिए भी आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। फंडिंग आपको सिर्फ 4,800 यूरोस एज पर द जर्मन ग्रीस एम्बेसी, 4,800 यूरोस आपको अपने अकाउंट में दिखाने, दैट्स ऑल, नो अदर ब्लॉक अकाउंट, नथिंग इज रिक्वायर्ड। और अगर जैसे स्टूडेंट ये पेरिस और ग्रीस का ऑप्शन लेके जाते हैं, अपना बैचलर्स या मास्टर्स 1 ईयर इन्होंने पेरिस में या ग्रीस में किया, उसके बाद ये बर्लिन कैंपस में मूव ऑन हो रहे हैं फर्दर स्टडीज के लिए, डिग्री कंप्लीट करने के लिए, तो इनको ये डिग्री मतलब कहाँ का मतलब मिलेगा इनको, जैसे ये? Okay, so basically, as I've said, let me say this, that we have 3 academic partners, all right? Number 1, we have UCA. This is one of the, I would say, most popular university in UK. The university name is UCA, University of Creative Arts, all right? And this is the 7th best university in entire UK, let me tell you one thing, all right? So one is UCA, second is CUC, Concordia University, Chicago, जो कि एक US based university है, एंड तीसरा है इंटरनेशनल टेलीमेटिक यूनिवर्सिटी, विच इज अ इटालियन और रोम बेस्ड यूनिवर्सिटी। तो अब डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से कोर्स में जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे ज्यादा जो कोर्सेज हैं वो हैं यूसीए के। लेट मी कुछ मैं कोर्सेज के नाम लेता हूँ। बीएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी इन एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, एंड देन ऑब्वियसली इन हॉस्पिटैलिटी वी हैव अ ग्लोबल एमबीए, फाइनेंस। तो बच्चा अगर ये कोर्सेज चूज करता है तो उनको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी यूसीए की, ऑलराइट। सो मींस जो एफिलिएटेड होगा या जो अवार्डिंग बॉडी है वो है यूसीए। बच्चा पढ़ेगा पेरिस में पढ़ सकता है बच्चा, और ग्रीस में पढ़ सकता है, या फिर हमारे हैम्बर्ग या बर्लिन के कैंपस में पढ़ सकता है, लेकिन जो डिग्री आएगी, डिग्री बच्चे की उस यूनिवर्सिटी से आएगी जिस यूनिवर्सिटी का बच्चे ने प्रोग्राम ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज बेसिकली सीयूसी। तो हमारे पास कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी शिकागो के 2 कोर्सेज हैं, वन इज एमए इन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेकंड इज एमबीए, ऑलराइट। तो अगर बच्चे दोनों में से कोई भी कोर्स करते हैं तो उसकी जो डिग्री होगी फाइनली एंड ऑफ द डे जब उसका कोर्स खत्म होगा तो उसको डिग्री कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी शिकागो की मिलेगी जी। BSBI is not an Italian university or Italian college. BSBI is
a German or Berlin-based college, a B school, all right? But yes, we have affiliation from the different universities. We have affiliation from Italian University, जिसका मैंने अभी नाम लिया, International Telematic University, इसको इंग्लिश में बोलते हैं. BSBI also have, let's say, the affiliation बोलो इसको या collaboration या academic partnership with a US-based university, जो कि CUC है, Concordia University, Chicago. And the third university, BSBI की जो collaboration है या affiliation है, वो है UCA, University for the Creative Arts. तो BSBI, let me clear this, BSBI को इटालियन कॉलेज नहीं है या इटालियन यूनिवर्सिटी नहीं है. बहुत सारे हाँ, ये हमारी अवॉर्डिंग कंफ्यूजन है. नहीं, let me, I think there should not be any confusion now. जो हमारा कॉलेज है बेसिकली, this is a Berlin based college, right? आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अभी दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में you know this DU, right? Delhi University. तो Delhi University is basically located in the Delhi, right? बट एफिलिएशन इन्होंने काफी सारे कॉलेजेस को दे रखा है, जैसे कि किरोड़ीमल कॉलेज एक है, राइट? और इसी तरह से क्या है कि कॉलेज है दूसरे, लेकिन जो पढ़ा रहे कोर्स करिकुलम जो है, सर्टिफिकेट जो है या उनके जो फाइनल डिग्रीज हैं, वो DU अवार्ड कर रही है. तो सिमिलरली क्या है, एफिलिएशन है एक, राइट? सो दिस इज सिमिलरली BSB is the college and the awarding bodies are different, these three universities. जी. Good. So now this is the point कि without block count भी option है हमारे पास, और BSBI also German based. And now the last 2-3 more points left only. Of the students login file with the BSBI, then the BSBI assists for the internship also and also placement. Okay, so Manpreet ji, I think this is again a very very, I would say, important question, and जो कि इस क्वेश्चन को लेके भी बच्चे काफी बार पूछते हैं, स्पेशल जो शहर के बच्चे हमारे दिल्ली और ऐसे मेट्रो सिटीज के बच्चे, उनका बड़ा कंसर्न रहता है. But let me again tell you this fact also. ये जो प्लेसमेंट है, इंटर्नशिप yes is there, but जो प्लेसमेंट शब्द है ना, ये मैं बोलूँगा कि ज्यादातर हमारे इंडियन और एशियन रीजन में ही ज्यादा यूज होता है कि भाई हमने, जैसे स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने MIT का नाम लिया या शारदा यूनिवर्सिटी, LPU एंड लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, राइट? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी को या यहाँ पे बच्चे प्लेसमेंट क्यों मांगते हैं? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी. जैसे मैंने बताया कि 7-8 लाख रुपए अगर एक साल का आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और यूनिवर्सिटी अगर उसका ROI अगर आपको ना दे पाए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप 8 लाख रुपए अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बच्चे का ये हक बनता है पूछने कि भाई हम आपके यहाँ पढ़ेंगे तो हमें इसके बदले में हमें जॉब्स क्या मिलेंगी, जॉब की श्योरिटी क्या मिलेगी, प्लेसमेंट, तब जाके प्लेसमेंट लोग बोलते हैं. बट दिस ऑनेस्टली बताऊं, मे बी बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छी ना लगे. प्लेसमेंट जो ये शब्द है, ये वर्ड है, ये ज्यादातर ओवरसीज में यूज नहीं होता, नॉट ओनली जर्मनी बट ज्यादातर कंट्रीज में इस शब्द के यूज नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता है. नाउ लेट मी टेल यू क्यों नहीं होता. बिकॉज जब भी आप स्पेशली इंडिया के बाहर किसी यूरोप में चले जाओ या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK चले जाओ, तो वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां इटसेल्फ दे गिव यू इनफ, आई वुड से, द अपॉर्चुनिटी. ये जो पार्ट टाइम करने का आपको राइट मिला है, ये उसी का है. आई थिंक दिस इज, आई वुड से, मैं अगर इसको सिंपल या इंडियन या एशियन भाषा में समझाऊं, तो ये जो पार्ट टाइम है, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर प्लेसमेंट. सेकंड थिंग, ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको, जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, वहां पे आपको 18 महीने, जैसे जर्मनी के अगर मैं रेफरेंस में बात करूं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर और द मास्टर्स और एनी कोर्स विच इज बियॉन्ड 6 मंथ, यू विल गेट 18 months ऑफ जॉब सीकर वीजा. तो ये भी, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर जॉब, दिस प्लेसमेंट. एट द सेम टाइम, जैसे आपकी जॉब लगती है, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम उसको अपना वीजा जो है रिन्यू कर सकते हैं, आप अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग वंस अगेन, ये सब चीजें क्या हैं, ये पार्ट टाइम क्यों है, ये आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा क्यों है, ये यही है कि ताकि आप अपना बेसिकली, स्पेशली मैं अगर पार्ट टाइम की बात करूं, पार्ट टाइम बेसिकली आपको पूछना, जो कि हमने डिस्कस भी करा है. तो दिस इज अ गुड पॉइंट टू काइंड ऑफ आस्क कि भाई जर्मनी में पार्ट टाइम मिलता है नहीं मिलता है. सो ये जो पार्ट टाइम का मतलब है, ये यही है कि बेसिकली इट्स नॉट ओनली दैट यू शुड बी फोकसिंग और यू शुड बी अर्निंग मनी ओनली, बट पार्ट टाइम देने का पर्पस ये है कि आप अपने नेटवर्क बनाओ. आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो वहां पे बेसिकली यू शुड बी काइंड ऑफ थिंकिंग योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल. ऐसे नहीं कि आप स्टूडेंट समझ रहे हो या फिर आप समझ रहे हो कि भाई मैं 2-4 घंटे यहाँ पे करके और देन आई एम अ हैप्पी मैन. नो, मार्केट में आपको बहुत कुछ सिखाती है. एग्जैक्टली, आपका एक तो आपको बेसिकली वहां का कल्चर का फर्क पड़ता है, कल्चर आप सीखोगे. दूसरी बात, वहां पे आपको कल के दिन अगर जब आप जॉब करने जाओगे, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे किस तरह का स्किल चाहिए, किस तरह का वर्क फोर्स चाहिए, किस तरह की पर्सनैलिटी मेरे को करनी चाहिए. सो दिस शुड बी द आइडिया, दिस शुड बी द पॉइंट्स व्हिच वन शुड कीप इन माइंड, राइट? तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा था इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट. सो प्लेसमेंट के लिए बेसिकली देयर इज नथिंग लाइक प्लेसमेंट, बट यस, college like BSBI will give you enough kind of platform. हमारे पास हम आपको ऐसा environment देंगे जहाँ पे कि आपको
इट इज एज गुड एज गिविंग अ जॉब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल टूर हम करवाते हैं, इंडस्ट्रियल टूर करवाने का मतलब वही है कि भाई यू सी मीट दीज पीपल हु आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, talk to them, try to understand कि वो किस तरह से काम करते हैं, number 1. Number 2, we also invite a lot of guest speakers from the different companies. हम लोगों को जो बेसिकली वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लेट्स से कि अगर कोई हॉस्पिटैलिटी की क्लास हमारे पास है, तो व्हाट वी डू इज वी विल इनवाइट लॉट ऑफ लेट्स से किसी जनरल मैनेजर को बुला दिया, किसी फ्रंट ऑफिस डायरेक्टर को बुला दिया, F&B डायरेक्टर को बुला दिया. They come to BSBI, they share their experiences, they try to kind of interact with the student, बताते हैं उनको कि भाई अगर आपको जर्मनी में जॉब करनी है, अगर आपको हमारे जैसे होटल्स में जॉब करना है, so what all knowledge, what kind of personality, किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए. This is second. इसके अलावा we also organize lot of interactive what do we call networking events, जहाँ पे कि हम बच्चों को basically obviously companies के साथ में interaction करवाते हैं. So what I'm saying is, so all of these activities, there's only one objective, there's only one purpose, there is only one motive of these activities कि बच्चों को हम लोग not only education, वही बात है कि हम केवल उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, केवल ओनली पढ़ाना, हम उनको केवल जो MBA का सिलेबस केवल वही नहीं रटाना है, वही नहीं उनको करना है, बट we want to make them a true professional कि एक कॉर्पोरेट में कैसा काम होता है. This is what BSB can help you out. इसके अलावा मैंने एक just 1 more minutes, हमारा जो करियर सर्विस सेंटर है, so this is the department which is basically there are a lot of local people, there are a lot of local staff, Germans, and there are people who are very well connected with the industries. तो वो भी उनका मेन काम वही है कि इंडस्ट्रीज के साथ में टाइप करना, इंडस्ट्रीज का बेसिकली अपडेट अपने पास रखना, ताकि अगर कहीं पे भी किसी तरह की वैकेंसी है, so that they can kind of inform our student. So BSB as a college, I would say we give all kinds of assistance, ताकि बच्चे को प्लेसमेंट शब्द ही भूल जाए बच्चा, बस बच्चे को ये रहे कि हाँ यार this is what I am. Guys, yes. So now one last question. जैसे स्टूडेंट स्टार्टिंग में एंटर हो रहे हैं जर्मनी, मतलब BSBA में आ रहे हैं, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द जर्मन लैंग्वेज, तो बट स्लोली ओके BSBA उनको जर्मन लैंग्वेज क्लासेस दे रहा है, बट स्टार्टिंग में फिर वो बिना जर्मन लैंग्वेज के पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस पे कैसे, मतलब उनको प्रॉब्लम आती है या कुछ, मतलब कैसे करते हैं बच्चे मैनेज? See, this is again another very important question, I believe, because क्योंकि मैं इतना जरूर मैं जानता हूँ कि जो भी स्पेशली कॉलेज लाइक BSBI, हमारे पास जैसे मैंने बताया कि मोर देन 30+ और 35+ नेशनैलिटीज हमारे पास हैं. ज्यादातर ऑब्वियसली लेट मी बी ऑनेस्ट, ज्यादातर बच्चे बेसिकली इन ऑब्वियसली जर्मनी के बाहर के हैं. वी हैव स्पेनिश, वी हैव ऑब्वियसली इरानियंस, वी हैव अफ्रीकन्स, वी हैव एशियंस, एंड वी हैव मेनी स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो ये सारे जो बच्चे हैं ना, not all of these people communicate in German language, and neither most of them understand German language, right? So one thing is BSBI is there to support them, BSBI is there to help them, because जैसे मैंने बताया कि हम लोग वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जर्मन लैंग्वेज आपको पढ़ाते हैं. जब मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम जो बच्चे जर्मन नहीं जानते वो ऑब्वियसली इंग्लिश ही जानते हैं, राइट? सो जब हम इंग्लिश की बात करें, तो नंबर 1, एज फार एज योर स्टडीज आर कंसर्न, German language is not at all required, especially either for the visa purpose के लिए भी नहीं जरूरत है. This college में भी अगर आपको प्रोसेस करना है, कॉलेज में भी अगर आपको ऑफर लेटर प्रोसेस करना है, ऑफर लेटर चाहिए, you don't need any kind of German language. And at the same time, जब पार्ट टाइम जॉब करोगे, still this is not a compulsory. Let me be honest. Let me tell you this point, because पिछले 4 साल में I have recruited almost 1000+ students. All right. और सब बच्चे ऐसे नहीं कि सब कैसे वो जर्मन बोलते थे, मे बी इक्का दुक्का हो जाए तो हो जाए, बट 99% बच्चे कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं आती किसी को, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आप बिना जर्मन लैंग्वेज के भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, राइट? पार्ट टाइम जॉब ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने बताया कि आपको होटल्स में मिल सकती है, आपको शॉपिंग सेंटर्स में मिल सकती है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश में आप अच्छे हो, और डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस आपको वहां पे जॉब मिल सकती है. बट अगेन लेट मी रिपीट दिस, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पार्ट टाइम जॉब और पढ़ाई कर सकते हो, तो अगेन जर्मन लैंग्वेज विल स्टिल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपके पार्ट टाइम जॉब, उतनी अच्छा आपका बेसिकली वहाँ का नेटवर्क, उतना अच्छा आपका सर्कल बनेगा, उतना ही अच्छा बेसिकली यू विल बी काइंड ऑफ फ्लरिशिंग आफ्टर योर स्टडीज. So yes. I'm done with my all queries and points. You clear all points very well. मतलब जर्मनी, अगर जर्मनी बच्चा BSBA चूज करता है तो बिना जर्मन लैंग्वेज की भी स्टार्टिंग है, और वहां जाके जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस BSBA से मिल रही हैं, और कोर्स ऑप्शंस भी हमारे पास हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो साइंस से है, चाहे वो कॉमर्स से, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है. BSBA गिव ऑल कोर्स ऑप्शंस, राइट? और मतलब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है एडमिशन टाइम पे.
और Yes. उसमें स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी आप लोग बहुत अच्छे से दे रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस भी हैं, और जो सर्विसेज जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं वहां जाके कैसे वीजा एक्सटेंशन, सिटी रजिस्ट्रेशन, तो सारी सर्विसेज भी आई गेस ऑन कैंपस है, राइट? तो एक बस लास्ट एक क्वेरी है, जो मतलब इसमें एज गैप एक्सेप्टेबल भी आई गेस ऑप्शन रहता है ना? जी, see, as far as basic, yes, as far as basically the post graduation programs या जो हमारे मास्टर्स के प्रोग्राम है, उसमें ऑनेस्टली बताऊं तो देयर इज नॉट एज सच कोई एज लिमिट नहीं है, राइट? एज फार एज स्टूडेंट इज हैविंग अ वैलिड आई वुड से द वर्क एक्सपीरियंस और कोई जस्टिफिकेशन है गैप का, सो आई एम श्योर दे विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज आई कैन टेल यू हमारे पास ऐसे भी बच्चे जो 40, 42, 45, 46 ईयर्स के भी वी हैव स्टूडेंट्स. So you can imagine, I'm sure all of these students will have gap more than 10 and 12 years. So, justified gap होगा, अच्छा work experience है then. As far as justified gap is there, we don't have any problem. And जब हम bachelor's की बात करें, so bachelor's में I would suggest you कि वहाँ पे gap ना हो. Gap नहीं होने का मतलब मेरा मतलब ये है, yes, +2 के बाद हो, या फिर ये जो कोविड का जो गैप है, obviously that is well understood, we can justify that, वो पूरी दुनिया को पता है. और उसके बाद भी अगर इफ यू से कि भाई किसी, अब नाउ लेट मी काइंड ऑफ शेयर अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पे कि बच्चे ने +2 करा था 2017 या 18 में. अब उसके बाद बेसिकली बच्चे ने फिर करा 1 साल का कोई डिप्लोमा कर दिया, 2 साल का डिप्लोमा, और उसके बाद अगर बच्चे का जॉब है देन इट इज एक्सेप्टेड, राइट? मींस +2 के बाद अगर इमीडिएट जॉब है, आई एम टेलिंग यू दिस विल बी आई वुड से लिटिल नेगेटिव, क्योंकि +2 के बाद जॉब होना मतलब इट मींस कि यू आर नॉट समहाउ either good in studies or you are not financially stable. तो इस वजह से हम लोग +2 के बाद इमीडिएट जॉब लेना प्रेफर नहीं करते, ना ही एम्बेसी करती है, ना ही बेसिकली एज अ कॉलेज हम करते हैं. +2 के बाद जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपना एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए टाइम देते हैं, जेई एडवांस मेंस या फिर नीट वगैरह के लिए, तो वो भी आई गेस जस्टिफाइड गैप रहता है. Yes, that is also justified, but obviously see, अब ये जो जेई या किसी भी तरह का अगर बच्चा एग्जाम कर रहा है, तो वो भी ऐसे तो होगा नहीं कि बच्चा 4, 5, 6 साल तक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, right? It will be hardly, let's say, 1 year or 1.5 year, yeah, maximum 2 years. That is well justified. We can accept that. Fine. Thank you. Now I am done with my all queries. So thank you so much. आगे भी और कुछ भी queries होंगी, then again I will invite you on my channel for all query clarifications. Yes. So Manpreet ji, thank you so much. I'm equally very happy and very, I would say, charged, motivated, and thank you so much for, I would say, connecting with me. I know I've been kind of pushing you for a long time. Let's say we should work together. And finally, we are basically we have come at one page, right? And I can see you are working really hard, and lot of students, especially जब से आपने BSBI, obviously you have understood the entire process of BSBI, आपने visa process समझा, आपने application process समझा. And just to tell or just to inform all our viewers, the Career Talk and the Manpreet is basically they are really, I would say, the great people. They're knowledgeable, they're professionals, and you can definitely reach out to them. And for any kind of queries regarding BSBI, regarding the admission process, fees, intake, they are the one basically who are registered and who are authorized. I would say the consultant. They are one of our very reliable partner. So thank you so much, and very excited, and it was really great show, great talk. So we will be keep on kind of doing these kind of things so that all our audience, all the applicants, all the people who have doubts or who have some plannings in their mind for the BSBI for Germany, I'll be more than happy to answer any kind of queries for them. Thank you so much. Thank you. Thank you, Manpreet. Thank you so much. Have a good time and stay safe, and please take good care of you. Same to you. Copy paste.